Hello and welcome to this News9 special. We are going to talk about the sinking towns in the Himalayas. They have been in the news for a lot of reasons. And the reason that they have been in the news is, of course, with one aspect, that there is a huge environmental degradation happening. There is subsidence of land in many of these hill towns, and also at the same time, we have seen how prone to landslides these towns have become. What is the reason for this? A lot of people being saying that it is because of the construction activities, unplanned, unscientific, and that too on a fragile ecological system. Now, these towns are also witnessing a burst of tourism and overexploitation of its natural resources. The topography destruction of the hills has resulted in several aggravated natural disasters. Many hill towns are reporting subsidence, landslides, and erosion of soil. Uncontrolled development in the sensitive zones have resulted in natural disasters, as we have seen in the case of Uttarakhand as well as Himachal Pradesh, where flash floods have in fact created havoc. The SE is consulting a panel to look into the carrying capacity of these hill towns. What is the carrying capacity? Well, it is whether this particular township can support a population capacity which does not allow for the degradation of the environment. So the SE is in fact looking into it, about how to go about it. But how is it possible to in fact go ahead and have sustainable development in the hill towns? Let's take a look at this special story. Experts say Himachal Pradesh is paying the price of unplanned development. लोग हमारे नदी में घुस गए, नदी घरों में नहीं घुसी, घर नदी में घुसे, नाले घरों में नहीं घुसे, घर बनाने वाले नालों में घुस गए. The state is battling its worst floods in decades. Massive damages have been reported in parts of the state due to cloudbursts and landslides. As per the data that's been available, it's been found that the rains have been 43% more than our annual average. So that itself is a cause of concern. It's a cause of worry rather, I would say. But then man-made activities, because of our requirements of housing, of our roads, of our development, we have encroached upon the natural waterways. It's a scary picture that's emerging from the state every day. Mountains fail either because of the slope. They cannot withstand a very steep slope. Other reasons could be that there has been deforestation. These mountains, I believe, they have been absorbing a lot of water. In a way, there is no free drainage available. Landslides, damaged roads and houses collapsing like a pack of cards. The Chief Minister says the state has suffered damages to the tune of nearly 10,000 crores. We could find that certain parts are showing very high landslide susceptibility zone. Similarly, for Kullu, Mandi region or Himachal region, some very significant area comes under a very high landslide susceptibility zone. The Chief Minister seems to agree that this is a natural plus man-made disaster. Experts agree the rainfall has been unprecedented, but they have also believed that the state is paying the price for unplanned growth. Experts say mountains and jungles have been ravaged to build roads, leading to frequent landslides. Now this is a big lesson for all of us, especially the technocrats. It's a big lesson for us, even for the planners, that we should not be coming forth with, say, off-the-shelf solutions. We have to think hard about it and get the real situation. If there is something which is vulnerable and which is not likely to withstand such like disasters, well, we must look for alternates. Many areas have been identified as prone to landslides. Experts say that the government as well as the people need to be aware of the risk of unplanned construction. पहले 8-8 स्टोरियां बनती थी, पर उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी होती थी. एडवांस स्टडी आज है, सचिवालय आज भी खड़ा है. तो उस दृष्टिकोण से लोगों ने घर तो बना लिए, जमीन खरीदी, और बेचारे जो काम करने वाले थे आए वही आर्किटेक्ट बन गए. तो उस दृष्टि से भी हमको सोचने की जरूरत है, बाय लॉज को मजबूत करने की जरूरत है, जो उपेक्षा हुई है
और धीरे धीरे अब इसका नुकसान अब हो रहा है, तो हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करने वाले हैं. The Chief Minister says rules will be strictly enforced to stop rampant construction. The National Remote Sensing Agency has identified many places in Mandi, Hamirpur, Bilaspur, Shimla, Kulu and Kangda as landslide prone. So this is the kind of situation that we are looking at. We are going to see some of these sensitive zones completely being destroyed. And how do we in fact go about it? Well, it is going to be a complex situation because there is this demand for development everywhere. But does a sustainable development, well, that is something that even the people in power are trying to understand. But is it too late to actually think about it? That is another question in itself. Well, we are also joined in by Atul Sati, environmental activist, as well as Dr. Sushil Kumar, who's a scientist and former head of geophysics, Wadia Institute of Himalayan Geology in Dehradun, who joins us also. So let me go to first to Atul Sati. You know, when I was looking at this particular story about how bad the situation is when it comes to the Himalayan region, I think a lot of development activities were just, carried out in ecologically sensitive zones in the name of whatever politics and administration that was there, without understanding the fragile nature of the ecology around these hills. And today we are paying the price for it. Is that the case? निश्चित ही बिल्कुल यही कहानी है, चाहे वो हिमाचल में अभी जो हो रहा है, उत्तराखंड में जहां हम लोग हैं, और जोशीमठ जिस शहर में मैं हूं, ये शहर इसकी कीमत चुका रहा है. और न सिर्फ ये शहर बल्कि अभी तो इस मानसून में हम देख रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको सरकार ने कहा कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड, वो पूरी की पूरी ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक पूरी डैमेज है. उस पर गाड़ियां चलना मुश्किल है. और 2018 में जब ये काम शुरू हुआ, उससे पहले जो हालत थी सड़क की, जितनी चौड़ाई थी उसी चौड़ाई पर सड़क पहुंच गई. आप इसको 10 मीटर चौड़ा करना चाहते थे, ये जो है आज के दिन पर 6 मीटर भी नहीं रह गई. अधिकांश 90% जगहों पर 6 मीटर रह गई है. स्वयं जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक दिन पहले अपने स्टेटमेंट में कहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ भूस्खलन के नए क्षेत्र डेवलप हो गए, जहाँ पर सड़क की हालत खराब है, जहाँ पर सड़क कभी भी बाधित हो सकती है. और बद्रीनाथ से लेकर के ऋषिकेश तक पूरी सड़क जो है खराब है, उस पर यात्रा करना मुश्किल है. लोग जो है जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं. ये उस विकास की कीमत लोग चुका रहे हैं जिस विकास पर लोगों ने सवाल उठाए. लगातार लोगों ने कहा कि आप हजारों पेड़ अगर काट देंगे तो ये पेड़ कटने से वहाँ जो पेड़ उस भूमि को, उस जमीन को, उस मिट्टी को बचाए हुए हैं, वो जो है बरसात आने पर सरकेगी और ये नुकसान करेगा. यही हाल जोशीमठ में है. यहाँ आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर जो विकास का ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, लगातार इस पर लोगों ने सवाल उठाए, लगातार कहा कि हिमालय जो है फ्रेजाइल जोन है, कमज़ोर जगह है. यहाँ अगर आप ऐसा करेंगे, यहाँ तमाम रिपोर्ट्स हैं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं पहले से, इस इलाके के लिए खतरा होगा. उसकी कीमत जो है पूरा जोशीमठ शहर चुका रहा है. आज के दिन पर न सिर्फ जोशीमठ, पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र, चाहे आप उत्तरकाशी चले जाइए, चाहे आप धारचूला चले जाइए, सब जगह जो है ये हालत बनी हुई है. नैनीताल जो सबसे प्लैंड सिटी रही है, जिसको अंग्रेजों ने बसाया, उसकी हालत खराब है. अभी जो वहाँ बारिश हुई है इस मानसून में, नैनीताल में स्थिति खराब है. वहाँ पूरा एक इलाका जो है नीचे आने को तैयार है. तो जो विकास के नाम पर जो हम लोगों ने खड़ा किया है ढांचा, ये जो है आज इसकी कीमत जो है यहाँ जो हिमालय में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, वो इसकी कीमत चुका रहे हैं. Well, Sati ji, you have in fact spoken about Vikas ka Keemat, which is to say the price of development, in fact. But let me also get in Dr. Sushil Kumar, who's also a scientist and a geophysicist. Dr. Sushil Kumar, this question that I have for you is that how fragile is the Himalayan region? Are these Himalayan towns, they are technically tourist towns. The British discovered that place because, of course, they couldn't, take in the heat from the plane. So they just went to places where it was much cooler. They set up their, holiday spots. But these holiday spots are now becoming huge cities and towns. It's going beyond the capacity. Recently, it was said that Shimla, which could
technically house only 25,000 people as a capacity to ensure it does not have environmental degradation, is having 2.5 lakh people as population. So sustaining such populations, of course, is going to bring in the degradation of that environment. But I just wanted to ask, are the Himalayas built for heavy construction? Because we see how environmentally fragile it becomes. A small rain is what it takes to actually show the administration that Himalayas are actually fragile. You can't think of huge projects in the Himalayas. Is that the condition? Can you just make us understand what is the soil structure and what stops from huge constructions from actually being placed in the Himalayas? It is true that Himalaya is a young mountains. And certainly there is a lot of soil cover is there. This is there, but new development, what is going on, because we are living here in Dehradun or Joshimath, and similarly in Himachal Pradesh also, we are living in seismic zone 4 and 5. Okay. But what is going on? In the new development, we are basically constructing all-weather road, we are constructing multi-folds hotel in the Joshimath area even, and at other places also. So we are not considering that seismic zone, as some minister just now he said that we need to check. This is also very important because Joshimath is basically constructed on moraine, which is a glaciated material, and that is up to 30-degree deep also. And Okay. if you will carry heavy load to these mountains, 4 or 5-story hotel, so you are also carrying a lot of iron also. So gravity also play a role in that. And with the hotel, all material is coming down and making a lot of cracks. Similarly, all-weather road as well. This is a very good program. I will not criticize at all this program. This is very important and good program. But we need to check at every step. Whatever we are making unstable to the mountain, that actually we should make the stable as well through retaining wall, through proper this iron fence, etc. Otherwise, what will happen? If we make unstable, and in the monsoon season, what will happen? The lot of load of rain water will come upside, and unstable part will come down, and lot of cracks also will get developed. And in Joshimath, the whole area is sliding. So the hotels, whatever sewerage, etc., that is totally failed. What is going on? That is all get damaged, and all the water is pouring inside. So all the moisture is below the hotels and etc. And that is also making cause of basically sliding the whole mountain. And similarly in Himachal as well. And we cannot deny that the climate is changing. Earlier we were not having Tiri, Jheel, we were not having so many other this kind of water storages. So earlier Bhagirathi and Bhilangana will producing very limited kind of precipitation. But nowadays what is going on? We are having multi-fold precipitation in the mountains, in the form of clouds, and the hills play the role. They get dense, and there is multi-cloud busting, and at the ground also we are having very loose kind of material due to so many activities. So we need to get checked, and we need to also check the population going inside Badrinath, Kedarnath, etc. I'm not saying we should stop them. Of course, we can't ask them to stop you, but of course we need to see whether we can sustain such tourism networks as such, because at the end of the day, I don't think so any of these hill towns are able to take that kind of a capacity. But Dr. Sushil, you put a very interesting aspect when it came to construction activity. You were saying that heavy materials were being taken for construction of these huge resorts and hotels. My small wisdom, what I understand is that when it comes to construction in hill areas, you actually look for wood, lighter material for construction, because there is a capacity for the foundation to be sustained in the mountains. I mean, it's not that you have, as you rightly pointed out, iron is being brought in, heavy gravel is being brought in, the cement structure itself, when it comes as a huge, it has a weight on that soil. The soil can sustain only light
construction material. Is this unscientific nature of this leading to all this collapse? Unscientific construction practices, because you're trying to still bring a concrete jungle into this place where, of course, the load capacity of that soil is not to sustain this kind of a foundation. Dr. Sushil? Yeah. This is a very important question actually. And in Dehradun as well, I'm here. This is seismic zone 4, but I can see so many structures like in Noida. Those are unplanned, unplanned, because if any earthquake of magnitude more than 7 will trigger, so certainly there will be a lot of damage. So similarly here also, we need to check if we are constructing a hotel or a house in seismic zone 5, that is in Joshimath. So we need to follow the earthquake resistant design. The government have very good program for this. But the need is to check everything. I think the local society should work for that, to check everything, all weather road also. If they are constructing the road, how if they are not protecting properly, the government cannot check everything. All right. We need get checked through local people to either whatever they are making unstable, that is they are also making stable as well as, or not. All right. Because I have seen Japan in the mountain side, if there is no slide as also, there is a iron fence is there. No, a single stone also cannot drop on your head. Okay. So we also need to check everything here. Well, also let me get an Atul Satiji into this. Atul ji, आपने विकास की बात किया, कितना विकास हो सकता है इस रीजन में? क्योंकि हर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, हर प्रशासन आते हैं और बोलते हैं यहाँ हम विकास करेंगे. कैसा विकास है? विकास दिखाना चाहिए ना. तो जब विकास दिखाना चाहिए तो बड़े प्रोजेक्ट्स लाते हैं और उनको ये पता नहीं कि इतना फ्रैजाइल जोन है और विकास दिखाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है. जब एक छोटी सी रेन भी होता है, देयर इज फ्लैश फ्लड्स, इरोजन होता है, एंड ऑल योर एंटायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, especially these hotels and resorts, they tend to be eroded out as well. So this problem है ना, it's more about political development that is happening at the same time that is creating this trouble, because विकास दिखाने के लिए कुछ चाहिए और बड़ा चाहिए, क्योंकि बोल सकते हैं कि अगली चुनाव में यहाँ विकास हुआ है. Is that the problem? निसंदेह आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसमें एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा जो सुशील कुमार जी कह रहे थे. जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी, उसको लेकर के लोग पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए. सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटी, डॉक्टर रवि चोपड़ा जी की अध्यक्षता में. उस कमेटी के पास हम लोग भी गए और हमने ये पॉइंट रखा कि सड़क जो है अगर इतनी चौड़ी यहाँ बनेगी हमारे इलाके में, पूरे पहाड़ में, तो यहाँ के लिए खतरा होगा. और पूरी कमेटी वहाँ बैठी हुई है देहरादून में, उस पे सारे मेंबर्स उसके थे. उनके सामने हमने पूरा पॉइंट अपना रखा, प्रेजेंटेशन रखा कि इस तरह से नुकसान होगा, ये होगा. वहाँ एक जो है उसी कमेटी में एक इंजीनियर साहब थे साउथ इंडिया से. उन्होंने कहा कि आप मिस्टर सती, आप जो बात कह रहे हैं इसका कोई ग्राउंड नहीं है. वी हैव अ टेक्नोलॉजी दैट वी कैन कट द माउंटेन एज अ केक, लाइक अ केक. हम केक की तरह जो है इन माउंटेन्स को कट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है. तो आई सेड टू हिम, तो व्हाई डोंट यू यूज दैट टेक्नोलॉजी? आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं करते? आप जिस तरह से काट रहे हैं ये खतरनाक होगा यहाँ के लिए. ये एक बात है. जिस टेक्नोलॉजी की बात सुशील कुमार कर रहे हैं, एक बात ये. दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जो जिम्मेदारी है जनता पर जो डाल देना है. जनता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, लोगों ने सवाल उठाया, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, और हम लोगों ने भी लगातार इस बात पर सवाल उठाया कि आप इतना चौड़ा यहाँ करेंगे, जिस तरह की कटिंग आप कर रहे हैं खतरनाक होगा. जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट है 530 मेगावाट का, इसको लेकर के शुरू से सन 2003 से हम लोगों ने सवाल उठाया कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लाएंगे तो इस इलाके के लिए खतरनाक होगा. लंबा आंदोलन इसके लिए चला, कोर्ट में लोग गए, लोगों ने जो है लंबा संघर्ष किया, सरकारों ने नहीं सुना और उसकी कीमत
आज है। तो जनता लगातार बोलती रही। अच्छा, जहां तक ये जो आप कह रहे हैं 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग की भी जो बात है, तो जो 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग हमने बनाई, यहाँ किसी ने भी, वो हिमाचल में भी वहां के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, तो वो उसको बनाने की परमिशन किसने दी, उसकी इजाजत किसने दी, उस पर मॉनिटरिंग किसको करनी थी, उस पर रेगुलेशन किसको करना था? जिनको रेगुलेट करना था उन्होंने रेगुलेट नहीं किया, जिनको ध्यान देना था उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हम लोगों ने यहाँ इस सूबे के जो है, जो पहले के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके सामने इस बात को रखा जब उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। हमने उनसे कहा 2005-6 में कि इसकी इजाजत आप दे रहे हैं। आप ही आर एस टोलिया साहब थे, नहीं है दुनिया में, तो आर एस टोलिया साहब के सामने हमने इस बात को रखा कि जोशीमठ में इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप लोग इसकी इजाजत दे रहे हैं, खतरनाक होगा। तो ये बात नहीं है कि जनता इस बात को नहीं उठाती। दूसरी बात जो आपने कही कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, निसंदेह ये जो ऑल वेदर रोड है, ये ऑल वेदर रोड सन 2004 में जब भाजपा की सरकार थी, उसमें केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे। उस समय जो है ये ऋषिकेश से लेकर के ये बद्रीनाथ तक की रोड चौड़ी की गई बाकायदा, और हमने तब भी इस बात को उठाया कि इतना चौड़ा सड़क यहाँ नहीं चाहिए। वही चौड़ी सड़क जो है 2013 की आपदा आने तक वहीं पहुंच गई जहां ये 2004 से पहले थी। उसके बाद जो है 2018 से ये चल रहा है ऑल वेदर रोड का प्रोग्राम। 10 मीटर आपने सड़क को चौड़ा किया और आज जो है पुनः सड़क वहीं पहुंच गई है 6 मीटर पर। अधिकांश जगह जो है वो 6 मीटर पर सड़क चली गई है, उतनी चौड़ी रह गई है। तो लोग लगातार सवाल उठाते रहे और खंडूड़ी जी को जो है उसकी वजह से लगातार वोट मिले, वो लगातार यहाँ से सांसद चुने जाते रहे केवल सड़क की चौड़ाई के कारण, जबकि उनके सामने लोगों ने बात रखी थी कि इतनी चौड़ी सड़क होने पर यहाँ खतरा होगा। और अभी भी जो ऑल वेदर रोड की बात है, इस ऑल वेदर रोड को केवल पॉलिटिकल पर्पज के लिए इसका नाम रखा गया 4 धाम, और सरकार चाहती है कि धार्मिक उसके जरिए कि हम जो है चारों धामों के लिए चौड़ी सड़क ले जा रहे हैं जिससे वहां पहुंचना आसान हो जाएगा। उसके नाम पर आप जो है उसका पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। आपको क्या जरूरत है ऋषिकेश से बद्रीनाथ जो है 6 घंटा 8 घंटा में पहुंचने की? क्यों है इतनी जल्दी? और उस जल्दी का कारण ये है कि आज के दिन पर पहले जो है जोशीमठ से या बद्रीनाथ से आप देहरादून तक 10 घंटे में 12 घंटा 14 घंटा आपको लगता था। जब ये सड़क चौड़ी हुई और 6 महीने लगभग ये चौड़ी रही, जो बरसात आने से पहले 8 घंटे में 6 घंटे में जोशीमठ से लोग देहरादून पहुंच रहे थे, और आज के दिन फिर सड़क वहां पहुंच गई है कि जोशीमठ से देहरादून पहुंचने में 14-15 घंटा लग रहा है। तो जो है आपने जो विकास के नाम पर और इसका जो पॉलिटिकल गेन करने के नाम पर जो इतना पहाड़ को खोदा, उसकी बर्बादी की, उसका जो है पुनः वो वहीं पहुंच गया। आपका 12,000 करोड़ रुपया जो इसमें लगा वो पानी हो गया, वो वहीं आ गया है दोबारा से। तो इसलिए इस पर हमको वैज्ञानिकों को भी ईमानदारी से बोलने की जरूरत है, उनको भी सख्ती से कहने की जरूरत है। सारी जिम्मेदारी जनता पर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी सरकारी संस्थान में भी हैं तो आपको खुल करके ये बात कहने की जरूरत है कि सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। सरकार की नीतियां, ऑल वेदर रोड के नाम पर आपने जो किया, जिस तरह की जो है EIA और इस सबको जो है आपने दरकिनार किया, पर्यावरण के तमाम उसके जो मानक थे उनको दरकिनार किया, तो इस पर जो है जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको भी सख्ती से खुल करके ठीक से बोलने की जरूरत है। सरकार का बचाव करने की जरूरत नहीं है। Well, Atulji, that is a very strong statement coming in from your side. Dr. Sushil Kumar, it is a statement saying that, scientists have to be open about what is happening in the, mountainous areas. Recently, I was also reading that remote sensing satellites imagery was actually used to understand the subsidence and landslides that was there. In News9, what happened is that 1.5 months ago, we spoke about the rains in Himachal and Uttarakhand. Flash floods were happening, large buildings were falling. Then we spoke about how the tourists were being stuck. After 1.5 months, the recent cloudburst, we are speaking same. We are talking about the same topics again. So every time it rains, it has become very vulnerable. Once upon a time, I mean, you were talking about a weather phenomenon that happened, some 40-50 years. Once it would happen, that is becoming very frequent. I am speaking about the same rain-related disaster that's happening in the hill regions right now in a matter of just 1.5 months. The same issues, the same landslides, the same issues regarding erosion, the same issues about how flash floods are happening. So, when you do, what does the remote sensing satellite data actually reveal?
what is happening underneath the mountains? Are the mountains stable, or is there a worrying factor which is probably going to lead to evacuation of large number of people? Because the Supreme Court also has given an is trying to constitute an assessment panel. But I want to know from the point of view of scientists, what is exactly happening underneath the Himalayan mountains? Are they stable? Are they not stable? Because we need to know what the truth is, because we can't let this kind of development go unbridled over there. We are living in dynamic system. Okay. This is not static. The Indian plate is moving 40 to 50 millimeter per year towards northeast. So the whole system is moving. And I have not said that the government is whatever doing is perfect, but need to check everything. This is important, and that can be checked. The government, if himself cannot do they should make a committees. They should check properly, because the all-weather road is from Dehradun to Badrinath or Kedarnath, whatever it is. So the work is very. So Sushil Kumar ji, you're saying that there should be some kind of scientific assessment before giving sanction for a project? Yes, because at some places, if you will make double the road, you cannot do that, because the cliff is 90 degree, and in 90 degree, if you will touch also that, the whole mountain will come, the upper mountain will come down, and this is going on nowadays. So whatever we are doing, where we are cutting, so that should be checked, that should be basically investigated by the scientists, that we are doing this part, how it should be dug and how it should be retained, what kind of retaining wall should be there. So everything should be need to check, otherwise this will happen. So you scientists are not there in any of these panels when they give out a planning commission, or sorry, not the planning right word, when there's a planning board, the planning board doesn't have any scientists to give a proper assessment saying that this is the kind of development that we require. Is that the case, that scientists are not there in these panels? Is that the case, that's why things are not reflected? Yes, there are scientists, but now as climate is changing, we need to basically revisit everything. What happened in Rishiganga? Rishiganga, the power project, the whole get destroyed, and everybody has checked that how much risk can be there from the mountain, from the snow, and they did all the parameters. But as climate is changing, we are constructing many new things. So everything need to revisit whatever is near the mountains, below the basically snow covered areas. So everything need to recheck. The whole weather are needed to recheck. अतुल जी, आपने बताया कि लोगों ने बात सरकार की, they have in fact spoken to the government of the day, but nobody was hearing. एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन दे रहा है और डेवलपमेंट के लिए, और एज आई वाज टेलिंग सुशील जी ऑल्सो, this is after 1.5 months I'm speaking about the same issues regarding Uttarakhand and Himachal and the hill states as such. What is the immediate thing that can be done? Immediate action क्या कर सकते हैं वहाँ अभी? देखिए, दिक्कत ये है कि जो योजना बनाने वाले लोग हैं, सरकारों में जो लोग हैं, वो जो है लगातार आ रही आपदाओं से सबक सीखने को तैयार नहीं, जिसका जिक्र अभी सुशील कुमार जी ने किया। 2021 की आपदा है ऋषिगंगा वाली, उससे पहले 2013 की जो है केदारनाथ आपदा है, जिसमें हजारों लोग जो है, 5,000 से ज्यादा तो सरकार ने कहा, लेकिन जो वैसी फिगर है उसमें लोग कहते हैं कि 15 से 20 हजार लोगों ने जिसमें जान गंवाई। उसके अलावा जो है 91 का भूकंप है, 98 का भूकंप है, और लगातार यहाँ जो है इस तरह की आपदाएं पूरे हिमालय क्षेत्र में आ रही। इससे जो है सरकारें सबक सीखने को तैयार नहीं, बल्कि यहाँ तक कि मैं तो जो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा आगे जाकर के कह रहा हूँ कि सरकारें जो है इस विकास के लिए, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं उनकी भी बात को दरकिनार करने के लिए नियम कानून बने हुए हैं। पर्यावरण संबंधी जो नियम है उनको भी किस तरह से बाईपास किया जाए, उसके लिए तमाम रास्ते खुल रहे हैं। अभी जो बिल पास हुआ है फॉरेस्ट
को लेकर के, जिसमें कि अब आपने पूरी खुली छूट दे दी है। मतलब पूरे बॉर्डर एरिया से 100 किलोमीटर के दायरे में आप जो है जो चाहे कर सकते हैं। आपने इतनी सारी उसमें छूट ले ली है, और पूंजी के प्रवाह के लिए, उनके लूट के लिए खुली छूट है। तो अभी इमीडिएटली तो जो सरकार है वो तो यही कर रही है कि किस तरह से जो है यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के जंगल को के दोहन के लिए किस तरह से नियम कानूनों में छूट हासिल की जाए, वो उन्होंने कर लिया। तो इमीडिएटली तो यही हो सकता है कि सरकार इन चीजों से सबक ले, और अगर वो नहीं लेगी तो आने वाले समय में आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, जिसकी तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं कि मौसम के जो बदलाव हैं, और उनमें लगातार कहा गया है कि इन मौसम के बदलावों का सबसे ज्यादा असर इन्हीं क्षेत्रों में होगा जिसमें जो अतिवृष्टि वाली घटनाएं होंगी, और लगातार ऐसी घटनाएं होंगी तो ये जो हिमालय का फ्रेजाइल जोन है, जहाँ जो है मानवीय गतिविधियां, मानवीय जो विकास का जो पूरा ढांचा खड़ा हो रहा है, ये यहाँ के लोगों को तो प्रभावित करेगा, यहाँ के जनजीवन को प्रभावित तो करेगा, लेकिन उसके साथ ही इस हिमालय की तमाम नदियों पर, इसके पानी पर, इसके जंगल पर, इसके स्रोतों पर निर्भर जो बाकी देश है, वो भी इससे प्रभावित होगा। तो इससे सबक लिए जाने की जरूरत है, यही कहा जा सकता है। Well, okay. I will just replay that package in which we were talking about the situation in the Himalayas, especially when it comes to the hill stations, just to, in fact, highlight the kind of difficulty that is there when it comes to actually balancing development with environment, and some of the well-known hill stations technically sinking because of landslides and subsidence. Well, just take a look at that story, and we will be back with our guests again. Experts say Himachal Pradesh is paying the price of unplanned development. लोग हमारे नदी में घुस गए, नदी घरों में नहीं घुसी, घर नदी में घुसे, नाले घरों में नहीं घुसे, घर बनाने वाले नालों में घुस गए. The state is battling its worst floods in decades. Massive damages have been reported in parts of the state due to cloudbursts and landslides. As per the data that's been available, it's been found that the rains have been 43% more than our annual average. So that itself is a cause of concern. It's a cause of worry rather, I would say. But then man-made activities, because of our requirements of housing, of our roads, of our development, we have encroached upon the natural waterways. It's a scary picture that's emerging from the state every day. Mountains fail either because of the slope. They cannot withstand a very steep slope. Other reasons could be that there has been deforestation. These mountains, I believe, they have been absorbing a lot of water. In a way, there is no free drainage available. Landslides, damaged roads and houses collapsing like a pack of cards. The Chief Minister says the state has suffered damages to the tune of nearly 10,000 crores. We could find that certain parts are showing very high landslide susceptibility zone. Similarly, for Kullu, Mandi region or Himachal region, some very significant area comes under a very high landslide susceptibility zone. The Chief Minister seems to agree that this is a natural plus man-made disaster. Experts agree the rainfall has been unprecedented, but they have also believed that the state is paying the price for unplanned growth. Experts say mountains and jungles have been ravaged to build roads, leading to frequent landslides. Now this is a big lesson for all of us, especially the technocrats. It's a big lesson for us, even for the planners, that we should not be coming forth with, say, off-the-shelf solutions. We have to think hard about it and get the real situation. If there is something which is vulnerable and which is not likely to withstand such like disasters, well, we must look for alternates. Many areas have been identified as prone to landslides. Experts say that the government as well as the people need to be aware of the risk of unplanned construction. पहले 8-8 स्टोरियां बनती थी, पर उसकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी होती थी. एडवांस स्टडी आज है, सचिवालय आज भी खड़ा है. तो उस दृष्टिकोण से लोगों ने घर तो बना लिए, जमीन खरीदी, और बेचारे जो काम करने वाले आए वही आर्किटेक्ट बन गए.
तो उस दृष्टि से भी हमको सोचने की जरूरत है, बाय लॉज को मजबूत करने की जरूरत है जो उपेक्षा हुई है, और धीरे धीरे अब इसका नुकसान अब हो रहा है, तो हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करने वाले हैं। The Chief Minister says rules will be strictly enforced to stop rampant construction. The National Remote Sensing Agency has identified many places in Mandi, Hamirpur, Bilaspur, Shimla, Kulu and Kangda as landslide prone. Well, that in fact speaks about how sensitive the region is and also the difficulties that are associated with it. Well, let's go back to our guests who have been following that particular aspect of trying to ensure that the fragile environment in the Himalayas is actually maintained and it's not destroyed. Well, let's now bring in the SE factor into this. The Supreme Court, my guess, what I would like to ask one of you is this, both of you all can answer this. The Supreme Court has said that it is constituting a committee of scientists, experts, environmentalists to assess what is happening with the hill stations or the hill towns and what is leading to the situation there. What they are saying is they want to know what is the carrying capacity of these hill towns. ये carrying capacity क्या होता है, वो population का support कर सकता है. As of now, मैंने शिमला की बात किया था, 25,000 is the actual population that Shimla can actually handle without destroying its environment. But it is 2.5 lakhs right now. So 10 times the kind of issues that we are in fact looking at. So what is that we are going to see when it comes to it? That is what is worrying even the Supreme Court. Supreme Court ki assessment hoga. But let me get Atul Satiji first into this. If the Supreme Court assesses this, and of course, agar pata chalega that the population is like all these hill stations overcrowd hua hai, क्या कर सकते हैं? They will be asking for evacuation. So that will be another human tragedy that will unfold. Is it going to be a difficult situation if the assessment report says that all the hill stations are overcrowded? निसंदेह जो है सारे ही जो हिल स्टेशंस हैं, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, जोशीमठ हो, यहाँ सब जगह जो है उनकी जो भार क्षमता है, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं, हो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजहों की तरफ जाना पड़ेगा। केवल ये देखने से कि ये जो कैरिंग कैपेसिटी है बढ़ गई है, अब इनको इवैक्यूएट कर दिया जाए तो आप जो है समस्या से समाधान कर लेंगे, ये होने वाला नहीं। जोशीमठ है या ऐसे जो शहर हैं, इनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी कैसे? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या जनसंख्या थी और आज के दिन क्या है? 2011 में जोशीमठ का सेंसस जो है 17,000 है। उससे पहले चले जाए तो जो है 12,000 की जनसंख्या है। उससे थोड़ा और पहले 10 साल पहले और चले जाए तो यहाँ की जनसंख्या जो है बमुश्किल 8-9 हजार। तो ये बढ़ते बढ़ते आज के दिन पर 20-25 हजार की जनसंख्या यहाँ हो गई है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि हमने जो अपना सारा विकास है वो शहर केंद्रित कर दिया है, नगर केंद्रित कर दिया है। आसपास के जो गांव हैं वो खाली हो गए हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, बाकी सुविधाओं के लिए गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ आ गए हैं। अगर हम जो है अपना जो विकास का ये जो मॉडल है इसको फैलाते नहीं है, इसको दूरस्थ गांवों की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो ये आप चाहे कुछ भी कर ले, अगर आप इस समय कुछ शहरों को इवैक्यूएट भी कर लेंगे, दोबारा से लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे। इसको जब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं करते, जोशीमठ में तो यह है कि हमने तो आज से 10 साल पहले ही केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्रालय को लिख करके दिया कि यहाँ जो आर्मी का सेटलमेंट है, यहाँ जो सेना का सेटलमेंट है, इसको कम किया जाए, इसको आगे बॉर्डर की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि अब जो है सीमा की तरफ मौसम इतना विकट नहीं रहता है और वहाँ काफी खाली जगह है। और यहाँ जो 8,000 से ज्यादा जो है सेना की लोग यहाँ रहते हैं, अगर उनको आगे बॉर्डर की तरफ ले जाएंगे तो जोशीमठ जो है एक तो उसकी भारत क्षमता कम हो जाएगी, उसके लिए जो है फैलाव के लिए जगह मिलेगी और यहाँ बाकी विकास के कार्य हो सकेंगे। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब यहाँ जोशीमठ में आपदा आ गई है तो सरकार और सेना के लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि सेना को यहाँ से, अगर सेना यहाँ से शिफ्ट होती है तो जोशीमठ जो है आधा से ज्यादा खाली हो जाएगा। ऐसे ही जो है नैनीताल जो जगह है या मसूरी है, वहाँ भी लोगों के केंद्रित होने का, संकेंद्रित हो जाने का कारण यही है कि वहाँ जो आसपास है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके आसपास के जो गांव हैं लगे हुए उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लोग जो है रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए वहाँ सब संकेंद्रित हो गए हैं। तो इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर
गांवों की तरफ विकास को ले जाए, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं, वहां शिक्षा की सुविधाएं ले जाए बगैर आप शहरों को जनसंख्या के भार से कम नहीं कर सकते। वो आप उसको फेस करेंगे ही करेंगे। अगर आप अभी आप खाली कर भी देंगे तो 5, 7, 10 साल बाद फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई अध्ययन कर भी रहा है तो उसकी वजहों की तरफ जाने की जरूरत है। Oh, that's in fact a very interesting revelation that you have given, that because the development is concentrated around these towns, the villages are getting empty, and that's how the population of these towns are increasing at the same time and leading to the kind of situation that we see. But let me in fact get in Dr. Sushil as well. Dr. Sushil, what is it when we say that the population pressure geologically, how does it alter the entire thing? Because when population pressure builds on an environment like this or these hill towns, it destroys the topography part of it, isn't it? People talk about geographical this thing, but topography destruction is what is the thing that we can see right on our faces when we see the kind of construction that is happening. So can you just explain to us geologically what actually happens when the pressure on the hill towns increase when it comes to population? What is the geological changes that normally happens when when the pressure is there? Actually, the important thing is we need to understand the mountains actually. What we are doing basically, we are the people population pressure is there. So the other things also comes with that. Means the construction increases with that. If we are making a construction of 2-story building and multi-story buildings there, so there is need to check every that place clearly. The soil is having the strength, how much is the strength it can, how much load it can carry, and we basically all people, if multi-fold people, if they were living and now 1,000 times people increase there. So they will make their houses not single story like the other old mountain people. So we should promote there. I would like to say that there should be basically we should promote the local people. They understand the mountains. The people those go from the plains, they don't understand the mountains fully. What they do basically, like in the plain area, they try to make the 3, 4, 5-story buildings there with their means and no checking, nothing. So that is also important. We should stop that first. It means the population is in this sense, it is dangerous there. So we should stop the people going there, constructing so many things there. We should stop them first. And second, deforestation also should be stopped. If deforestation will be there, so certainly the soil lose their strength and their catchment, and the other things will happen there like cracking, etc. What we are facing there, and we should understand one thing very clearly. Nowadays, like in the previous time, there were only we need to hear sometimes only there is a cloud busting happen in some such village, but now we are having like in Kedarnath multi cloud busting. Due to our storage of water, like Bhagirathi Bhilangana were having only the meters catchment. Now we are having kilometers, several kilometers long and wide. I'm not saying that is dangerous, but we should be prepared for that ourselves. Means we should be ready what will happen in future. So these things are necessary if we are basically making the mountains development. Similarly, like widening the road. Widening the road is okay, but don't unstable the mountain, because if you are making if your mountain is stable and you are cutting the toe, so the whole mountain will get unstable. So there are methods to stop, to basically prevent that kind of slide, but we not did, I think. That's why we are having multi landslides in Himachal as well as in Uttarakhand. Well, thank you, in fact, Sushil ji, as well as thank you, Atul ji, for in fact speaking to News9 and giving us an insight about what is exactly happening in the mountainous regions of Uttarakhand as well as in Himachal. Well, on the other side, we are going to talk about India's bid to find its place in the United Nations Security Council. Well, it's been many times that India has been trying to say that the United Nations Security Council
as well as the United Nations to a large extent represents only the reality of what happened after World War II and now even post the Cold War. It seems that the equations must have not changed when it comes to institutions in the United Nations. So how does India plan to find its place in the United Nations and also bring some kind of reform to represent the global south as well as to give more representations to African nations in the world body? That's on the other side. इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं. Coaching is now starting from grade 3, 4, 5, 6. होता जाने वाली